Hello students, welcome back to your class. Okay. The next morning I walked along the shore and little hill. Okay, we have done from यहाँ तक and now we will continue from here. Okay. The next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. Every day I toiled. I brought tools, wood, rope, nails, seals, and cloths, and guns, and ammunitions, and sugar, and flour, and bread, coins. The sunshine made them sparkle. ठीक है, कहते हैं अब रोज़ मैं जाता था, रोज़ यही चीज़ें दोबारा से लेकर आता था जो वो लेकर आते थे. मुझे कुछ कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें भी मिली जैसे कि गोल्ड वगैरह, ठीक है, और सिल्वर वगैरह भी मिली, लेकिन वो कहते हैं वो ऐसे शाइन करी थी धूप की वजह से बिल्कुल स्पार्कल सी थी वो. What use are you to me? I asked. Everyone in the world desires you but me. अब वो इन सब चीज़ों को कहता है कि तुम मेरी किस काम की हो. दुनिया में हर बंदा तुम्हें चाहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस वक्त. When I got back to my island, I noticed that the sky was black. Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. I saw the ship out at sea rise and went sink beneath a huge wave. अब जब कहते हैं मैं आइलैंड वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आसमान बिल्कुल काला हो चुका है, बादल आ चुके हैं, बारिश शुरू हो गई थी. ठीक है, अपनी कश्ती को देखा, वो लहरों के साथ झूम रही थी, अचानक से वो गायब हो गई थी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई बिजिड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग stockade around it. I used one of the sails from the ship for the roof. I cut down tree trunks and carried them to the house and slowly built a strong stockade to keep out wild animals. फिर कहते हैं मैंने अपने आप को बिजी कर दिए घर बनाने में. डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्टॉकेट्स इकट्ठी की, स्ट्रॉन्ग घर मैंने बनाया ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे मैं बचा रहूँ. The month passed in hard works and one day I set out to explore the whole island. The journey took me 3 days and when I got to the other side of the island I found a delightful valley. There were wild grapes and limes and I collected a quantity of these and took them back to my house. One day in the forest, not far from my house, I found some wild goats. I was just about to shoot one when I saw at my feet a baby goat. I picked it up and carried it home with me. In a few days, it became quite tame and after that, it never left my side. ठीक है, कहते हैं अब क्या होता है कि कुछ महीने गुजरे, मैंने घर बनाया, एक्सप्लोर किया मैंने उस आइलैंड को, मैंने वो जगह देखी. ठीक है, वहाँ पर कहते हैं जब मैं आगे गया तो मुझे एक वैली नज़र आई. वहाँ पर डिफरेंट फल फूल थे. ठीक है, मैंने वो कुछ चीज़ें ली खाने की, एप्पल्स लिए, लाइम्स लिए. मैंने अपने घर की तरफ गया. कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ से कुछ गॉट्स मिली. ठीक है, कुछ बकरियाँ मिली. मैंने क्या किया, मैं उनको मारने वाला था कि अचानक से मेरी ध्यान अपने पाँव की तरफ पड़ा. वहाँ पर एक बेबी बकरी थी, एक छोटी सी बकरी थी. मैं उसको अपने घर ले गया साथ. ठीक है, कुछ दिनों बाद वो थोड़ी बेहतर हो चुकी थी लेकिन कभी उसने मेरा साथ ना छोड़ा. After a year or two on the island, I decided to make a small boat. I chose the wood carefully and cut and worked the timber for many months. I made a sail from some of the canvas I had brought on the shore from the ships. And with a good wind, the boat sailed well. I taught myself how to make pots out of mud and how to make them hard and durable by burning them. I grew some corn and rice and also some wheat, and I taught myself to make bread. My life on the island was a happy one. I had a good house, plenty to eat and plenty of work to do. One day I was walking along the seashore thinking about my home across the sea when I suddenly looked down. There on the sand in front of me was a clear footprint. It was not mine but the footprint of another man. So क्या हुआ कि यह बोलने के कुछ सालों बाद, ठीक है, आइलैंड पे मैंने एक कश्ती अपने लिए बनाई, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी की, वहीं पर मैं काम करता रहा, लकड़ी काटी, टिम्बर लिया, मैंने कुछ सेल यूज़ की. ठीक है, मैंने कंप्लीट बोट अपने लिए बनाई. ठीक है, तो कहते हैं मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीख गया था, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, उनको ज़्यादा टाइम रखने के लिए उनको जलाना. ठीक है, मैंने कॉर्न्स भी उगाए, सिट्टे भी उगाए, चावल भी उगाए, गंदम भी उगाई. ठीक है, मैं ब्रेड बनाना सीख गया हूँ और आइलैंड पर मैं बहुत खुश रहता था. मेरे पास अपना घर है, खाने
खाने के लिए बस काफ़ी था, काम करने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। एक दफ़ा मैं घूम रहा था वहीं पे अपनी जगह पे, अपने घर के आसपास, कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सैंड पे एक फुटप्रिंट है, ठीक है। एक फुटप्रिंट है, वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था, लेकिन कहते ये मेरा नहीं था, ये किसी और ह्यूमन बीइंग का था। सो लकीली और अनलकीली आपकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई वॉज एक्चुअली क्यूरियस कि आगे क्या होता है, बट यहाँ पर सिर्फ इतनी है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो whole story about this situation, so you can buy this book Robinson Crusoe by Daniel Defoe, ठीक है। So you can buy the book and you can read the whole story. Hope so you have understood the chapter, you have enjoyed your chapter, ठीक है। This is the exercise we will do. Inshallah we will provide you notes. Okay, here we have a challenge again. In the first paragraph of the story, you will find many words for movement of one kind or another. Some tells us of simple actions, other tells us that there is a movement along with sound. Make a list of all these action words, note how they are used. अच्छा, कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर बहुत सारे साउंड्स हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स हैं, तो आपने वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।